थी रियाज नारेजो की रिपोर्ट दादू के इलाके से। अब हम सिंधी का एक और इलाका सखर, यहां से शाहिद अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और शाहिद अली आपको बताएंगे कि मुतासरीन सैलाब इस वक्त किन मसाइल से दो चार हैं। वी विल शो यू अ रिपोर्ट फ्रॉम सखर सिटी एंड आवर कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर शाहिद अली विल टेल अस द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्लड विक्टिम्स व्हिच दे आर फेसिंग देयर। सिंध में हालिया सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा तबाही कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, शहदादकोट, दादू और ठट्टा जिला में हुई, जहां लाखों अफराद बेघर हुए और वो हुकूमत और समाजी तंजीमों की जानिब से लगाए गए इमदादी कैंपों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। सैलाब के दौरान हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली के लिए बुलंदोबांग दावे तो किए, लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही नजर आए। आज भी हजारों अफराद कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं और सर्द मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। शिकारपुर शहर के अतराफ में कायम खेमों बस्तियों में कुछ लोग सर्दी से बचाव के लिए लिहाफ, गद्दे और कंबल मांग रहे हैं और कुछ खाने पीने की अशिया के मुंतजिर हैं। न सौड़ा न राशन का शइ न है, मेहरबानी कयो तो असांखे सौड़ा ॾियो, असां हिते पारे में मरी वेंदासीं। असांजा राति बचा सीअ में मरनि था, वेठा आहिनि ग़रीब, चवनि था असांखे कंबल ॾियो, असां काॾो ॾियूं, न थांव आहे न थिपो आहे, अलाह खे मनो असां सां को मदद कयो। असां ईअं सीअ में मरूं था, न असांखे को वारस करे थो, को का शइ न तके नथो। यूं तो समाजी तंजीमों ने इन सैलाब मुतासरीन को कैंप फराहम कर दिए हैं और कुछ तंजीमें इन खेमा बस्तियों में बच्चों को तालीम भी दे रही हैं, लेकिन लोग अपने घरों पर जाने के लिए बेचैन हैं। खुराक, जरूरी सामान और वतन कार्ड मुतासरीन की अव्वलीन जरूरत है। बच्चा बार बुखते पिया आहिनि, का शइ कोन्हे खाइण लाइ त खाऊं का, सरकार असांजे लाइ मदद करे। नंढड़ा बच्चा हिन में आया त मुंहिंजो मुड़ुस बि मरी वियो कीमन में, असांखे वतन कार्ड बि न मिलिया आहिनि, असांजा बच्चा भी मरी विया आहिनि बुख ते। अबे के चव का शइ कोन्हे, असांखे एतिरो न जे बच्चनि खे मानी पचाई खारायूं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में अब तक कोई कमी नहीं आई। शदीद सर्दी में मदद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन अपने हुक्मरानों को ढूंढ रहे हैं जिनसे इन्हें मदद मिलने की उम्मीद थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन नसरुल अरूक के साथ शाहिद अली, जियो न्यूज, शिकारपुर। ये शिकारपुर और सखर के इलाके से शाहिद अली की रिपोर्ट थी। Excellency, I know that you never understood the language, but you can understand the expression. So we just showed you the problems of the flood victims. Some areas are still underwater. So I would like to ask you, are you satisfied with the role of the international community in this disaster? Well, let me first of all express once more, since this is the first time I appear on this program today, express once more my sympathy with the victims and my condolences for those families who lost their dear members. I would like to say that such a calamity, such a big disaster, is beyond the possibilities of any nation. And this is the first time such big disaster happens anywhere in the world with this magnitude. And I think that we have all the international community has a responsibility to share with the people of Pakistan. Because we have no proof to that, but I think the changes in the climate and the hazards made by human beings to the environment have upset the natural balance and the natural harmony, and then you are faced with floods here a few years back, with tsunami in Indonesia, and we don't know when and where the next disaster will happen. So nobody can say that it happened there in one country and it's not my business. I think this is a human responsibility, and we have to share it all, and particularly for we as a Muslims, we are duty bound by our belief and our religion to share
responsibilities with our brethren all over the world. Having said this as a moral commitment, I would like to say that today, after the ceremony we will maybe you have shown of the inauguration of some 600 houses, the first installment were 100 house in the Punjab area. This came from certain donations from OIC staff member plus Cameroon and Guyana. Apart from this, after this, I met with the Turkish TRT correspondent who has been stationed here and who has been all over the places. He showed me films like this, the ones he showed me. And he told me that now, after 6 months, you go and certain places you find the same situation you have seen when you came in August at the beginning of the disaster, the flood. But you will find nobody there. These people are facing their fate, their destiny alone. And particularly in this cold weather, in this thin tents, I think we have a big problem there. Now, coming back to your first question, did the international community do all it can? I think there is a lot to be done. Today I was talking with the Prime Minister, and we are following, of course, in OIC, through our coordination office here, through the government, through different trips made by our colleagues to the area, following all the activities here. But we think that there is a need for more concerted efforts, there is a need for more help on the Islamic level and on the international level. जी, अबरार उल हक साहब, आपने बात सुनी सेक्रेटरी जनरल OIC. अब क्या करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to extend my thanks to His Excellency Ekmeleddin Ihsanoglu for gracing me with the title of first ever humanitarian ambassador of OIC. I think that's a matter of huge pleasure for me, for my entire Now you nation, have more responsibility. and for the youth parliament also. I will try to be more responsible. And yes, I think as a nation, first of all, I would like to appreciate all the international support and the entire nation of Pakistan who showed their resilience, who have showed their commitment to fight against this natural disaster. Number two, I would also like to mention that we as a nation at times forget things very quickly, which we should not. And I think even because now is a bigger phase, a phase of rehabilitation, in which OIC is supporting youth parliament and making 600 houses, which the Excellency has just mentioned. And we definitely need more people from the international community as well as from Pakistani community to come forward and support as much as is possible. And as you have already shown a film that in some of the area water has not receded. Yes, this is very sad. But you cannot do much about the land because then it's a natural phenomena. But you have other options to actually make their life easier. Those who are living in shelters, they need blankets and all that support. I'm sure people of Pakistan, and with your this program is very well viewed, so they will come up and try to support as much as possible. जी, ब्रिगेडियर साजिद साहब, ये जो इन्होंने भी एविडेंस दी और हमने भी आपको दिखाया, एनडीएम में जो है, क्या वो अवेयर है कि सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के बहुत से इलाकों में अभी तक मुतासिरीन सैलाब उन्हीं मसाइल का शिकार हैं जो 6 महीने पहले भी थे? जी, हामिद साहब, thank you very much. I think to start with, let me compliment Abrar Ulhaq for nominated as humanitarian ambassador to the OIC, and my compliment to His Excellency also for launching this program of construction of 100 houses initially and subsequently the 600 houses in affected areas of Pakistan. हाँ साहब, जैसे आपने बात की उसमें गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ इट, लेकिन सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि केस लोड जो है वो इतना है कि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट सपोर्ट द पीपल. और यही वजह है कि जब भी हम बात करते हैं तो वी से कि जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है या लोकल एनजीओ जो हैं वो, और प्लस द इंटरनेशनल डोनर्स, ये दोनों मिल के जब तक गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे
तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट इस सिनेरियो में अगर कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो अकेली इस जो क्लाइमेटी थी इसको संभालना मुश्किल था। आपने सिंध की सिर्फ रिपोर्ट दिखाई है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जाफराबाद जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जो सोबतपुर तहसील है और जो गंदाखा तहसील है उसमें भी आज पानी खड़ा है वहाँ पे, और सिंध के मुकाबले में वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा है। एंड लाइकवाइज जो जटपट तहसील है उसके जो जमाली बाईपास बना हुआ है जो लिंक करता है डेरा अला यार को और जैकमाबाद को, उसके दोनों तरफ पानी जो है वो खड़ा है। और इस वक्त मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 159,000 लोग हैं जो अभी तक कैंप्स में मौजूद हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वी बिगेन विद रिलीफ एंड रेस्क्यू एंड सब्सिक्वेंटली रेस्क्यू जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया एंड अगस्त तक, और उसके बाद जो रिलीफ का पीरियड है वो चलता रहा है। एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिलीफ टिल 31 जनवरी, और 31 जनवरी तक रिलीफ जो है विल कंटिन्यू। बट इसके साथ साथ ही अर्ली रिकवरी के जो प्रोग्राम्स हैं वो सितंबर लास्ट ईयर से वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और and tell us about the pledges and promises made by the international community. उसमें I think when I talked about the philanthropists and the civil society and the donors, I think the responsibility of the philanthropists, obviously they collect money through their own sources and they provide the relief. However, the donors are either supposed to give something to the government or donate something to the government so that the relief activities can take on, or the UN is to be fed through the donors so that the UN program which is being run as for the relief is concerned, the early recovery is concerned. Now for relief and early recovery, the announcement or the appeal which was made with the UN was I think $1.9 billion. And till today, the total pledges which has been made to the UN is the amount of 1.043 billion, which is 53% of the total requirement. Now, basically... So in 6 months, you have got only 53%. 53%, which has been subsequently given to the various clusters like shelter cluster, food, health, and water and sanitation clusters. And they are working in their own field through their implementing partner, which are the local NGOs, which are the international NGOs. जी, हमारी गुफ्तगू जारी है और इस गुफ्तगू में हम अंग्रेजी में भी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं OIC के सेक्रेटरी जनरल उनके साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास NDMA के नुमाइंदे मौजूद हैं, अबरार उल हक साहब मौजूद हैं, उनके साथ हम उर्दू में बात कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको साथ साथ तर्जुमा भी हम दिखाते जाएं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। Welcome back, and today we have the Secretary General of the OIC, Mr. Ekmeleddin Ihsanoglu, और वो तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का। Excellency, will you please tell us about the role of OIC in the recent floods? Well, actually, OIC was one of the first international organizations to respond swiftly to the floods, and immediately we had an executive committee meeting after 1 or 2 days where members of OIC countries on the executive committee came and we issued an appeal. Actually, I did not wait until the executive committee meets to make that appeals, but besides that we convened the executive committee and it has certain decisions to work for, and we on the 18th of August we had a coordination meeting here in Islamabad where we invited all NGOs and Red Crescent societies of OIC countries plus international organizations with the Pakistani authorities to coordinate our efforts, and I visited the area. I think on that day there was around $1 billion pledge from different institutions. According to the figures I have, official figures I have, we had from member countries official donations which comes up to $680 million from member countries. Out of these, the 3 countries are major donors. The Kingdom of Saudi Arabia donated $250 million, Turkey $200 million, and Iran $100 million. This is
the official figure